Hello students, welcome to channel M Sandhu. Today I Mahi Ekeman would be taking your session on force and pressure part 1. For other interesting videos, please visit the channel playlist and suggested video in the information link. So let's quickly get started on today's content. Objects around us change in many ways. A frequent change we notice is that they move or change shape. Have you ever wondered what causes these changes? They happen when force acts on object. Now the question arises, what is force? A force is of two types. A force is a push or pull, involves an interaction between two bodies which changes their motion. That means force किसी भी चीज़ पे जब हम पुश करते हैं या पुल करते हैं तो दो बॉडीज़ के बीच में जो इंटरेक्शन होती है जिससे उनकी मोशन चेंज हो जाती है उसको हम फोर्स का नाम देते हैं. अब हमने बात की है फोर्स इज़ ऑफ टू टाइप्स. वन इज़ पुश एंड सेकेंड इज़ ऑफ पुल. What is push and what is pull? Push means an interaction in which an object is moved away. When a person pushes a door or an object away from him or her, that is known as push. And pull is an interaction in which body or an object is moved closer. The example of pull, when person pulls a door, we can talk about all the variation of push or pull. These action are also the example of use of force also. These are picking, opening, shutting, kicking, lifting, flicking and pressing something. Now let's explore the forces, that how many components are in an applied force. An applied force consists of two components. First one is मैग्नीट्यूड एंड सेकेंड वन इज़ डायरेक्शन. जो इम्पैक्ट होता है फोर्स का वो डिपेंड करता है दोनों पर, बोथ इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट्स डायरेक्शन. नाउ वी विल टॉक अबाउट दैट हाउ फोर्स विल इम्पैक्ट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड ही डिटरमाइन करता है दैट हाउ स्ट्रॉन्ग द फोर्स इज़. ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ग्रेटर द फोर्स. डायरेक्शन जो होती है ये कंपोनेंट डिटरमाइन करता है इन व्हाट डायरेक्शन द फोर्स एक्ट्स. द डायरेक्शन ऑफ पुश इज डिफरेंट फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ पुल. दीज टू आर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड दीज डिटरमाइंस दैट इन व्हाट डायरेक्शन द फोर्स इज एक्टिंग. A good example to illustrate these components and how they alter force can be seen in cricket, in how a batsman hits different shots all over the field. जब हम डिफेंसिव शॉट लेते हैं और साथ ही साथ जब स्ट्रेट ड्राइव लेते हैं तो डायरेक्शन दोनों में सेम रहती है, बट जो स्पीड होती है बैट की वो डिटरमाइन करती है कि फोर्स जो लगेगा बॉल पे वो कितना रहेगा. समटाइम्स मोर देन वन फोर्स एक्ट ऑन अ सेम ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम. दैट मीन्स मल्टीपल फोर्सेस कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम. When this happens, it is the combination of these forces that affects the object and it is known as the net force. So net force is the resultant force that is acting on same object at the same time. We can have the examples of net force also. There are three main examples of net force. First one is forces in same direction. Second one is equal forces in opposite direction. Third one is unequal forces from opposite direction. When two persons try to push a box in same direction, then that is known as force in same direction. They are applying the force in same direction. And when the forces are applied in same direction, the forces would be add up and the box would move in the direction of applied force. That means we can say जो फोर्स होंगे वो दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसकी वजह से वो बॉक्स हमेशा उस डायरेक्शन में जाएगा जहाँ पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. सेकेंड इज़ equal forces in opposite direction. That means when two person are
trying to move a box but they are applying force in opposite direction. If one is in right side and second is in left side and they both are pushing the box, so that means they are applying equal forces in opposite direction. When equal forces are applied in opposite direction, they can cancel each other out. That means the box does not move. Why the box does not move? Because we can say जो दो पर्सन है वो दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, दोनों ही उस बॉक्स को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, पर दोनों ही उसकी अपोजिट साइड में हैं. इस वजह से वो दोनों ही उस बॉक्स को मूव नहीं कर पाते. द फोर्स इज इक्वल एंड बट दे आर अप्लाइंग इट इन opposite direction. That means the box would not move. Third one is unequal forces from opposite direction. See, here we can have two cases. First one is when the person standing on left side is healthier than the person standing on right side, and the second one is when the person standing on right side is healthier than the person standing on left side. The person who is less healthier than the other would not be able to move the box, but the person who is more healthier than the other person, that would be able to move the box in opposite direction. The combined force in this case will be the difference of forces. That means when the force applied by one is greater, then the block move to opposite side. As we can notice from here, when multiple forces acts on an object, the combined force is called net force. This net force is like a new single force on the object. Like all other forces, the net force has a magnitude and a direction as well. As here are two components of net forces, one is magnitude and other is direction. When both the forces are in same direction, the magnitude would be the sum of the forces applied and the direction would be same as that of the force applied. And in the case of force in opposite direction, the magnitude would be the difference between the forces applied and the direction would be the direction of the greater force applied. Equal forces in opposite direction cancel each other out. That is, the net force is zero in this case. Such forces that cancel each other out are called balanced forces, and they can only change the shape of object, not its state of motion. Before going ahead, here is a question to check your knowledge. You have to classify the following actions as a push or a pull. First one is opening a tiffin box. You can answer in comment box by commenting. Second one is striking a shot in carom. And the third one is sucking on a straw. You just have to classify these actions and you have to comment in the comment section. Suppose an object is in motion or at rest, and when we apply force on it, it can affect in different types on that object. An effect is some sort of change in the object due to the force applied on it. Here are some effects of forces which we are going to discuss. First one is change in shape. We can change the shape of something by squeezing it, by pressing it. Like if we are holding a ball in our hand, so if we squeeze it, it can cause a change in shape of ball. And if we stretch a rubber band by our hand, it can also change the shape of that rubber band. The second effect of force is the change in the state of motion. State of motion को हम describe कर सकते हैं इसकी speed और direction को at any point in time. तो सेकंड जो है हमारा इफेक्ट ऑफ फोर्स, दैट इज चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन. हम इसको दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, चेंज इन स्पीड, चेंज इन डायरेक्शन. जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो इसमें होता है
जब हम बैट्समैन होता है हिट करता है कोई भी ड्राइव, तो वो क्या होता है, उसकी डायरेक्शन चेंज कर देता है। कोई अगर आगे से ऑब्जेक्ट आ रहा है और हम उस पर फोर्स लगा दें तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगा। नेक्स्ट वन इज़ चेंज इन स्पीड। चेंज इन स्पीड मीन्स इसके भी आगे 3 पार्ट्स होते हैं, दैट आर रेस्ट टू मोशन, चेंजिंग स्पीड एंड मोशन टू रेस्ट। सपोज we have placed a football in ground, and when someone kicks this ball, this can make the football from rest to make it move. Second one is changing speed. By pushing a moving wheel, it can change the speed of moving wheel. मतलब अगर हम एक मूविंग व्हील को, वो उससे अपनी स्पीड चेंज कर लेगा। थर्ड वन इज़ मोशन टू रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और हम उस पर ब्रेक लगा देते हैं, जैसे कोई कार या फिर कोई भी साइकिल, उस पर ब्रेक लगाने से वो मोशन से रेस्ट में आ जाएगा। ऐसे ही अगर कोई फुटबॉल आपकी तरफ या कोई बॉल आपकी तरफ फेंकता है, या तो आप उसको कैच कर लो या फिर अपने पैर से उसको रोक दो, दैट मीन्स आप उसको मोशन टू रेस्ट में ले आएंगे। ब्रेकिंग ब्रिंग्स अ मूविंग कार टू रेस्ट ऑल्सो। नेक्स्ट हम फोर्स को 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज़ कॉन्टैक्ट फोर्स एंड सेकेंड वन इज़ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फोर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स बेस्ड ऑन द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन द सोर्सेज एंड द object when the force is applied. First one is contact force and second one is non-contact force. Contact force means जब सोर्स और ऑब्जेक्ट दोनों ही कांटेक्ट में हो, जो फोर्स लगाए और जिस पर फोर्स लगाया जाए। सोर्स एंड द ऑब्जेक्ट। सोर्स मीन्स जो फोर्स लगाता है एंड द ऑब्जेक्ट मीन्स जिस पर फोर्स लगाया जाता है, अप्लाई किया जाता है। When these both are in contact, then the force would be known as contact force. And when the source and the object are not in contact, the force would be known as non-contact force. जो सोर्स होगा और जो ऑब्जेक्ट होगा वो दोनों ही कांटेक्ट में नहीं होंगे। अब हम कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल्स के बारे में जानते हैं। मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल होते हैं। इनके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के जो एग्जाम्पल होते हैं, दैट आर मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल को डीपली पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज मस्कुलर फोर्स। इट इज़ द फोर्स exerted by the muscles of body. Animals and humans produce muscular force. A bodybuilder also use muscular force to lift weight, and the example of muscular force could also be to run and to punch someone. Next one is frictional force. It is the force between 2 surfaces rubbing against each other. Friction always opposes the state of motion of the body. The example of friction is between our shoes and the ground. It helps in walk. Third one is magnetic force. It is the force exerted by magnet on specific materials like iron. Magnetic force can attract iron filling toward a magnet. Fourth one is electrostatic force. It is the force exerted by an electrically charged body on another body. In this force attracts other charged or uncharged body or objects and repel same charged body. Electrostatic force makes our hair stand upright. Last one is gravitational force. It is the force applied by the earth on all the objects that are on earth. Due to this force, objects are attracted towards the earth, or we can say they are attracted towards the ground. The example of gravitational force is when fruit falls from tree to ground. So here ends the part 1. We will be back with the part 2 soon. For that, please subscribe channel M Sandhu, and thanks for watching this video.